TC-2, we observe both telemetry carriers are on. Copied. Roger. Roger. नमस्कार, सुप्रभात। एक बार नियंत्रण कक्ष से आप सभी दर्शकों के लिए प्रमोशन का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करेंगे। बहरहाल हम अपने अगले मिशन PSLV-C56 DS-SAR के प्रमोशन के लिए तैयार हैं। यह प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः 6:31 पर किया जाएगा। 6 अन्य सहयात्री उपग्रह इस प्रमोशन यान में अपनी कक्षा के लिए सफर कर रहे हैं। यह मिशन कुल 23 मिनट में पूरा किया जाएगा। तत्पश्चात चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोग में काम लाया जाएगा। Namaste viewers and a good morning to you all. This pleasant Sunday morning, ISRO is gearing for the 6th launch of 2023. The launch of PSLV-C56 DS-SAR mission from its spaceport Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota. I am Madhuri, joining you live from the Mission Control Center at the spaceport, together with my co-commentator Shri Vikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. This telecast is brought to you by Doordarshan. You can also watch the launch on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. The launch of PSLV-C56 DS-SAR satellite mission is scheduled to take place today, the 30th of July 2023 at standard time from the first launch pad of Satish Dhawan Space Center. This is a dedicated commercial mission whose launch services are being mediated by New Space India Limited. The primary satellite is DS-SAR, an Earth observation satellite weighing 352 kilograms, developed by Government of Singapore and ST Engineering. Along with this, there are 6 co-passenger satellites varying in weight from 3 kilograms to 23 kilograms, all belonging to the universities in Singapore. DSR is intended to be placed in 6,914 kilometers orbit with 5 degrees inclination, that is a near-equatorial orbit.
आज PSLV की 58वीं उड़ान है। इस साल हमने सिंगापुर के ही टेलियोस 2 उपग्रह का सफल प्रमोशन PSLV-C56 द्वारा देखा था। PSLV रॉकेट के इस विश्वसनीयता का ही फल है कि अब तक इससे कुल 423 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया जा चुका है। आइए अब आपको PSLV-C56 के इंटीग्रेशन वीडियो का दिखाते हैं। -27 minutes. As the viewers might recall, ISRO has launched the prestigious Chandrayaan 3 mission to the moon on 14th of July, mere 16 days ago. All systems of Chandrayaan are reported to be in good health, and a series of 5 earthbound maneuvers have been completed. And these are the visuals from the launch view gallery here at Sriharikota. Up next, you will watch the integration video for PSLV-C56 DS-SAR mission. प्रस्तुत है संक्षिप्त लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेशन वीडियो। यह अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह प्रथम चरण का प्रथम खंड है। प्रथम चरण सॉलिड S139 बूस्टर, इसके 5 खंड होते हैं। इसमें से यह प्रथम खंड है जिसे हम नोजल एंड सेगमेंट के नोजल के साथ संयोजित होकर लॉन्च इंटीग्रेशन फैसिलिटी लाया जाता है। इसे नवनिर्मित PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी पर संयोजित किया जा रहा है। मध्य में तीन -25 मिडिल minutes. सेगमेंट के खंड होते हैं। यह तीसरा मिडिल सेगमेंट पूरी दक्षता के साथ यह काम किया जाता है। कोई भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। यह है इग्नाइटर जो कि इस सॉलिड बूस्टर को प्रज्वलित करेगा। और यह भी आप देख रहे हैं SITVC जो कि प्रणोद सदिश नियंत्रण का कार्य करता है। SITVC पिच और यॉ दिशा में नियंत्रित करता है प्रथम चरण के प्रज्वलन के दौरान। और यह है RCT टैंक, रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर, जो कि रोल दिशा में यान को दिशा नियंत्रण देता है। और अभी आप देख रहे हैं यह इंटरस्टेज कहलाता है। प्रथम और द्वितीय चरण के बीच का यह इंटरस्टेज, इसमें रीट्रो 1 मोटर्स लगे हुए हैं। और यह इंजन जिम्बल चेक्स द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें यह विकास इंजन आप देख रहे हैं। इसको पूर्ण परीक्षित कर यहाँ इंटीग्रेशन फैसिलिटी लाया जाता है और प्रथम चरण के ऊपर में संयोजित किया जा रहा है। PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी से MST तक लाया जा रहा है। So far, you have watched the first stage and the second stage of PSLV getting integrated in the PSLV integration facilities, and the partially integrated launch vehicle has been moved to the MST. Here, this is PS3 and PS4. The third and fourth stages getting moduled in a separate integration facility and being moved as a single unit to the mobile service structure. They are being carefully hoisted and lowered on to the launch vehicle. These are the visuals from the clean room for the prime satellite DS-SAR facilities, and it will be moved to the launch pad for integration in the clean room that is created for this purpose at the mobile service tower. MCC to control unit number 428 completed. After the satellite is integrated above the PS4 stage, -22 minutes. the co-passenger satellites, Velox, are also placed at their respective places. MCC All this is taking place at the clean room environment.
Request all stations change over to channel 2 at T minus 20 minutes. Having completed all the No mandatory confirmation checks is for the needed health to of the control. rocket and the satellite, the payload fairing is closed. Data from chain 1. The launch vehicle being ready in all respects for the launch, the mobile service tower is receded back and moved to its parking location. COI to ROD, all EAS systems are ready. ROD Roger. जी हाँ, अभी आपने देखा PSLV C56 का इंटीग्रेशन। ROD Roger. ROD Roger. अभियान पूरी तरह तैयार है तथा अंतिम जांच जारी है। Real-time launch for PSLV-C56 DSR mission. TTC Director Roger. PSLV C56 के प्रमोशन की सारी तैयारियां पूर्ण हो SHAR चुकी wanted to हैं तथा confirm अंतिम normalcy गतिविधियों के of both पश्चात telemetry carriers. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस Copied. शुरू किया जाएगा। Activity confirm normalcy of SABT. प्रमोशन की उल्टी गिनती 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुकी है। Copied. 20 मिनट 35 सेकंड की दूरी पर हैं। इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक तंत्र तथा उपग्रह को पावर ऑन करना तथा स्वास्थ्य जांच पूरा करना। तरल नोदक वाले PS2 और PS4 चरणों में तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। साथ ही संचार तंत्रों का परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। Today's launch is the 58th flight of PSLV Minus 20 and minutes. 17th all mission stations change that over to uses the channel work 2. 40th from SDSC SHAR and 48th from the first launch pad. So far, ISRO has launched as many as 424 satellites. Launch of PSLV-C56 DS-SAR will add to the numbers. For Singapore, ISRO has provided launch services for Telios 2 mission. भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं व्यूअर्स, लॉन्च व्यूअर्स गैलरी पे। छात्रगण भी आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही उत्साहित हैं इस लॉन्च को देखने के लिए। सभी स्कूल के छात्र छात्रा यहाँ उपस्थित। The countdown for PSLV C56 DSR has been 25.5 hours long, during which a concert of activities are carried out for the readiness of range, launch vehicle, spacecraft and downrange tracking stations. The liquid propellants are serviced to the launch vehicle stages in the last T-10 hours or more. The onboard batteries are charged and the gas bottles filled with gases for stage functioning are pressurized. The meteorology section obtains and records critical data for committing the launch Minus and 18 day of minutes. launch wind biasing of the launch vehicle. This is Vehicle Director to Mission Director. All the system parameters of PSLV C56 launch vehicle are normal and within specifications. The launch vehicle is ready for PSLV C56 DSR mission. Mission Director Roger. अभी अभी यान निदेशक ने यान के परीक्षण के पश्चात यान की जानकारी मिशन डायरेक्टर को दी है। यह के लिए आगे जा रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रमोशन के लिए अब हम उड़ान से 17 मिनट की दूरी पर हैं। Minus 17 minutes. Timing to control, timing confirms external hold mode. Roger, VLCC1, LCC1, please note, timing confirmed external hold mode. LCC Roger. To Mission Director, DSR VLCC Roger. Singapore is ready for PSLV-C56 launch mission. Mission Director Roger. ROD to Mission Director, range is ready for PSLV C56 DSR launch. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of ISTRAC stations and network for supporting PSLV C56 DSR mission.
Mission Director Roger. उपग्रह निदेशक, रेंज PCPC, निदेशक, टेलीमेट्री data ट्रैकिंग एंड logger कमांड are on it, निदेशक, SHAR 1 and SHAR 2 यान stations. निदेशक ने अपने Copied. तंत्रों की जानकारी मिशन निदेशक को दे दी है। minus 16 minutes. This is Mission Director. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV-C56 DS-SAR mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions. Sri S.R. Biju giving his clearance and authorizing the launch, and the automatic launch sequence will now run, that is T minus 14 minutes onwards from the ground computers to check very important systems of the launch vehicle. Close to the scheduled launch time, the control is passed on through the onboard computers. PSLV is the workhorse rocket for ISRO, having a legacy of Minus ISRO's 14 own minutes. and commercial missions to a variety of orbits. Based on payload weight and orbit, the configuration is adapted as regular, XL, QL, DL or CA. CA represents core alone or no strap-on version of PSLV. It has a gross liftoff mass of 229 tons. PSLV is a 4-stage launch vehicle with alternate solid and liquid stages. The first stage is solid propellant stage called S139 with 139 tons of Earth storable propellant combination of UH-25 and N2O4 with 41 tons propellant loading. Third stage is solid propellant stage having a Kevlar filament wound case with 7.65 tons propellant loading. The fourth stage is a liquid propellant based stage with 1.4 tons propellant. The PSLV stands 44.4 meters tall. PS4 activation. PSLV C56 DS-SAR मिशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। पूर्ण संयोजित तथा परीक्षण के पश्चात T0 पर PS1 कोर स्टेज S139 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो। यह चरण करीबन 109 सेकेंड्स तक जलकर 4800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 50 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 1.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग प्रदान करेगा। इस चरण के दौरान ही प्रथम चरण को पृथक करने के पश्चात द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। द्वितीय चरण के दौरान ऊष्मा कवच यानी पेलोड फेयरिंग को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण का प्रज्वलन 152 सेकंड तक चलेगा और यान इस चरण के दौरान 169 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 4.23 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुका होगा। द्वितीय चरण के पृथकन के 1 सेकंड के पश्चात तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। यह चरण फिर से ठोस नोदक वाला चरण है और इसे उच्च निष्पादन HPS-3 मोटर कहा जाता है। यह 120 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। इस समय यान की ऊंचाई 220 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। फिर शुरू होता है कोस्टिंग फेज, जिसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त करेगा और यान की गति में मामूली गिरावट आएगी। फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा। यान इसके 263 सेकंड के पश्चात ही चतुर्थ चरण को प्रज्वलित किया जाएगा। चतुर्थ चरण अंतिम चरण है PSLV का, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें MON और MMH ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह चरण 272 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 14.6 किलोन्यूटन के प्रणोद के साथ यान को उद्दिष्ट कक्षा में लेकर जाएगा। DS-SAR मुख्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। तत्पश्चात क्रमशः न्यूलियन, ऑर्बिटल स्ट्राइडर, कैशिया 2, स्कूप 2, आर्केड और वेलॉक्स AM नामक
उपग्रहों को minus 10 उनकी minutes. कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इतना होने के पश्चात इस यान में चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोगों में काम लाया जाएगा। We are 9.5 minutes from the scheduled launch time in Yes, 9 kilometers. SITVC BPV open. Soon afterwards, the second stage ignites and carries the rocket up to 169 kilometers altitude in its operational time of 152 seconds. During the operation of second stage, the launch vehicle clears the dense atmosphere, so the closed loop guidance is initiated and the payload fairing is separated. The third stage ignites soon after the separation of second stage. After operation of 120 seconds, the PS3 burns out but continues to coast along for another 200 seconds. By this instant, the altitude of the launch vehicle is 335 kilometers. The fourth stage, PS4, together with the payloads, continue to coast for another 263.3 seconds. After the burnout of the third stage, Minus coast 8 phase minutes. adds an altitude of 244 kilometers to the launch vehicle, while its relative velocity reduces a little. The fourth stage ignites at 14 minutes into the flight and operates for 272 seconds, during which the orbital conditions are achieved for the ignition of prime satellite DS-SAR and 6 co-passenger satellites. The intended orbit is 6,914 kilometers circular orbit at 5 degrees inclination. The order of separation of other satellites is Neolon, Orbit 12 Strider, followed by Glacia, then the Scoop 2, then Arcade, and finally Velox AM. Thereafter, the upper stage is maneuvered to a lower orbit. Minus 7 minutes. अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर हैं। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। यह करीबन 14 मिनट चलता है और इस दौरान पायरो लाइंस को सेफ से आर्म मोड में लाया जाता है तथा सभी संचार तंत्र जैसा कि हमने बताया, PSLV प्रमोचन यान की कुल 57 उड़ानें हो चुकी हैं। यह 58वीं उड़ान होगी। PSLV की उसकी विश्वसनीयता के कारण इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। यह विश्वसनीयता सिर्फ प्रमोचन यान की नहीं बल्कि उस वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यवस्था तंत्र की भी है जो हर बार इस मिशन को सफल करने में सक्षम है। Minus 6 minutes. PSLV रॉकेट की विश्वसनीयता गुणांक 97.6% है। PS2 actuatron. हर एक सफलता के पश्चात इस गुणांक में वृद्धि होती रहती है। External power is withdrawn. Vehicle. PSLV न सिर्फ विश्वसनीय है, यह बहुमुखी भी है। प्रथम चरण के प्रणोदानुसार PSLV 4 मुख्य संरूपण में है: PSLV XL, QL, DL तथा CA, जिसमें क्रमानुसार 6, 4, 2 और 0 स्टेप-ऑन मोटर्स संलग्न रहते हैं। वर्तमान प्रमोचन यान PSLV C56 CA कोर अलोन संरूपण वाला यान है। We are close to 5 Minus minutes 5 from the minutes. launch. MC confirms. As a matter of fact, the uppermost stage of the rocket usually goes into the same orbit as the satellite the mission injects. The fuel left unused in the stage is vented and the stage is passivated. Passivation is a process of removing stored energy from space vehicle to reduce the risk of high energy release such as explosions or fragmentations. However, the spent stage is an orbital debris itself. The orbital lifetime of the debris is very long in certain orbits.
As a responsible space agency, ISRO is carrying out a change in the orbit of fourth stage after the accomplishment of mission. From 536 kilometers altitude, the fourth stage, PS4, will be brought down to about 300 kilometers altitude by firing the orbit Minus change 4 thrusters minutes. twice. First firing is scheduled 45 minutes into the flight and second firing is scheduled 90 minutes into the flight. The re-entry into Earth's atmosphere from 300 kilometers altitude is likely to be in the order of weeks or a month. Though the burns of OCT will be tracked by ISRO's ground stations, the live transmission will not be available for the viewers. On-board computers in flight mode. सभी दर्शक प्रतीक्षा में इस प्रमोशन के। अब हम प्रमोशन से 3 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने के पश्चात रॉकेट पूर्णतः स्वचालित होकर अपना आंतरिक जांच जारी रखता है तथा T0 पर या T-0.3 सेकंड्स पर सर्वप्रथम RCT का प्रज्वलन हम देखेंगे और तत्पश्चात T0 पर कोर बूस्टर S139 सॉलिड बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। We are 2.5 minutes from the scheduled launch time and the eagerness building up in the control center here. जैसा कि आपको बताया गया, इस प्रमोशन मिशन में सभी 7 उपग्रहों के प्रमोशन के पश्चात PSLV-C56 के चतुर्थ चरण को उसमें लगे ऑर्बिट करेक्शन ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स को प्रज्वलित कर उसे 536 किलोमीटर्स की कक्षा से 300 किलोमीटर की कक्षा वृत्ताकार कक्षा में 2 चरणों में लाया जाएगा। यह प्रयोग भावी मिशन ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है, सुचारू तरीके से पूर्ण हो रही हैं। अब हम प्रमोशन से 1 मिनट की दूरी पर हैं। -1 मिनट, -55 सेकंड्स। All SHARs armed. यान पूरी तरह स्वचालित है। Sequences armed. इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर आंतरिक जांच द्वारा सभी गतिविधियां निश्चित कर रहे हैं और T0 पर खुद ही S139 बूस्टर के प्रज्वलन का कमांड इशू करेगा। -30 seconds. Real time programs active. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Off. The PSLV-C56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी आपने देखा PSLV-C56 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोशन मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Normal thrust of PS1 stage 4800 kilonewtons.
The stage is 20 meters long and SHAR 2 is 2.8 in meters main in after 1 diameter. minute. इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा होता है। यह क्षेत्र काफी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए, लेकिन इसमें SITVC और RCT की मदद से रॉकेट को अपनी दिशा बनाए रखनी होती है और वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रथम चरण का प्रणोद जारी है। Presently, the launch vehicle trajectory is being tracked by SHAR stations. Operational duration for PS1 is 109 seconds. Stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला विकास इंजन वाला चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The second stage has commenced its operation. It's a liquid stage that has 41 tons of propellant loading. Fuel is 2H25 and oxidizer N2O4. इस चरण के दौरान ही पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा The stage and generates a maximum thrust of 800 kilonewtons. PS2